हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सियाराम आईएएस। मेरा नाम डॉक्टर सलोनी शर्मा है और मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ एक और पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस के लिए विच इज़ ऑफ जून 2025। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मई 2025 से लेके मई 2026 तक एंड बाकी के मंथ्स की भी जो जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मंथली पीआईबी एनालिसिस हम लोग कवर करेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन सच एज यूपीएससी, बिहार पीसीएस, यूपीपीसीएस एंड सच लाइक एग्जामिनेशन। ओके, तो इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन मेन जो टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे अलोंग विद द स्टैटिक पार्ट। एंड अलोंग विद दैट मैंने मेक श्योर किया है कि आपको प्रीलिम्स के एंड मेंस के क्वेश्चंस जहां जहां रेलेवेंट हो वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं इसके साथ में। आज के सेशन में लास्ट में क्वेश्चन की डिस्कशन भी होगी, मेंस के पर्सपेक्टिव से ब्रीफ डिस्कशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज हम कवर करेंगे फोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट इज योर ईसीआई रिफॉर्म्स, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में कवर करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर गवर्नेंस ऑल्सो। Okay, so this shall remain our first topic for the day. Second topic is PM Gati Shakti project. This is an integrated project. तो ये आपका schemes के लिए important रहेगा, mains answer writing के लिए important रहेगा. Then it will also be important for economics. Okay. Then the third project is National India AI Mission. India AI Mission is important from science and technology point of view. Fourth is your G7 outreach discussions. G7 के बारे में पढ़ेंगे. This is important from international relations point of view. Okay, so I hope the brief headings are clear. We'll start with the articles one by one. The first topic is ECI reforms, SIR. SIR is your special intensive revision. PIB ने cover किया था. See this topic from the PIB I have taken. ECI to begin special intensive revision of electoral rolls in Bihar. सबसे पहले जो revision start हुई है, ये जो SIR start हुई है, this is your special intensive revision. ये जो first state में start हुई थी, that was your Bihar. You should know this thing important थी कि बिहार से start हुई थी. Then further we had moved on to cover the next states and so on and so forth. Okay. तो इसमें क्या क्या कहा गया है? हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन टू बी डन टू इंश्योर एनरोलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स। किस चीज में एनरोलमेंट होगी? वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट होगी सिटीजन्स की, उसके लिए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, ये कहा गया है। Political parties to be encouraged to participate actively in the revision process. Now, coming on to the article, the Election Commission of India, ECI, today issued instructions for holding special intensive revision in the state of Bihar as per the guidelines and schedules specified by the Commission. The objective of an क्या objective रहता है SIR का? Is of an intensified revision is to ensure that the names of all eligible citizens are included in the electoral roll. इलेक्टोरल रोल में सभी सिटीजन्स के नाम इंक्लूड हो जाएं. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंग, so as to enable them to exercise their franchise. Franchise क्या होता है? Right to vote. No ineligible voter is included in the electoral rolls. कोई भी ineligible voter को ना include किया जाए, ये भी ध्यान रखा जाएगा. And also to introduce complete transparency in the process of addition or deletion of electorals in the electoral rolls. The last intensive revision for Bihar, this is also important कि बिहार में जो last intensive revision हुई थी, commission ने कब conduct की थी? It was in the year 2003. After that, we are conducting that in 2025. 2025 का article है, ठीक है? 2003 के बाद 2025 में बिहार में SIR कंडक्ट हुआ है. वेरियस रीजन सच एज रैपिड अर्बनाइजेशन. क्यों एक्सरसाइज की जरूरत है, SIR की जरूरत क्यों है हमें? इसके बहुत सारे रीजन हैं. रैपिड अर्बनाइजेशन, frequent migration, young citizens becoming eligible to vote, non-reporting of deaths, and inclusion of the names of foreign illegal immigrants have necessitated the conduct of an intensive revision so as to ensure integrity and preparation of error-free electoral rolls. ये सब पर्पजेस रहते हैं कि इंक्लूजन एज वेल एज डिलीशन एरर्स हमारे पास में ना हो. जो नए वोटर्स आए हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाए, जिनकी डेथ हो गई, माइग्रेशन हो गई, उन लोगों को हम लोग एक्सक्लूड कर दें इलेक्टोरल रोल्स में से. फॉर दैट पर्पजेस एक्सरसाइजेस बीइंग कैरिड आउट वेरी रिलीजियसली. ठीक है. The booth level officers, BLOs, shall be conducting house to house survey for verification during the process. तो BLOs का रोल रहेगा इसमें. जो ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो लोग कंडक्ट करवाएंगे इस सर्वे को.
Now coming on to some additional information which is important from this article. कुछ static information, कुछ current information के points मैंने cover किए हैं. Let's read them one by one. तो इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? फर्स्ट यू शुड नो इलेक्टोरल रोल्स क्या है. इलेक्टोरल रोल ऑल्सो नोन एज अ वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रजिस्टर is an official list of all eligible and registered voters within a specific constituency. एक constituency में जो जो eligible voters होंगे उसकी पूरी लिस्ट को हम लोग इलेक्टोरल रोल बोलते हैं. It is used to verify voter identities and ensure a fair and transparent electoral process during the elections. The electoral rolls are prepared by the ECI. कौन prepare करता है electoral rolls को? Election Commission of India prepare करता है under the, this is very important, किस एक्ट के अंडर प्रिपेयर होते हैं? आरपीए 1950 के अंडर प्रिपेयर होते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंडर प्रिपेयर होते हैं. दूसरी जो हमारी एक्ट होती है 1951 की, 1950 और 1951 की जो आरपीए, उन दोनों का डिफरेंस क्या है आपस में? जो आरपीए 1950 है, जो भी प्रोसेसेस इलेक्शन से पहले होते हैं, इलेक्शन जब कंडक्ट होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन में जो जो चीजें इंक्लूड होती हैं, जो सब प्रोसेस इलेक्शन से पहले रहता है, वो सारी चीजें इसमें होती हैं. हमारी लिस्ट जो होती है 1950 वाली, आरपीए 1950 एक्ट के अंदर वो सब चीजें इंक्लूड रहती हैं. जो आरपीए 1951 है, जब इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्शन के ड्यूरिंग एंड इलेक्शंस के बाद में जो जो चीजें होती हैं उसके पर्टिकुलर्स जो इंक्लूड हुए हैं वो हुए हमारे आरपीए 1951 की लिस्ट में इंक्लूड. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है, तो ये जो 1950 वाली लिस्ट है, अब इसमें इलेक्टोरल रोल्स का टॉपिक है. क्यों? क्योंकि इलेक्शन से पहले की जाने वाली एक्सरसाइज है. तो जो पहले वाली सारी चीजें वो 1950 वाली लिस्ट में, दैट इज वाई दिस एक्ट इज कवरिंग दिस. ठीक है. Now next thing, it excludes non-citizens. Non-citizens exclude हो जाएंगे. कौन से सेक्शन के अंडर? आरपीए के सेक्शंस की बात की है. These sections can be important क्योंकि एसआईआर बहुत न्यूज में रहा है. ठीक है, 2-3 सेक्शंस भी हम इसमें कवर करेंगे. यू मस्ट नो दोज. एक्सक्लूजन किस में होता है? नॉन सिटीजन्स का सेक्शन 16 के अंडर होता है. इंक्लूजन जो होता है सिटीजन्स का एज्ड 18 और अबव और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो होता है सेक्शन 19 में. So exclusion is for section 16 and inclusion is in the section number 19. Now next, SIR basically है क्या है? SIR is a focused, time-bound, house-to-house voter verification process conducted by booth-level officers to update and correct the electoral rolls before major elections. So election से पहले correction होती है. ठीक है, that is your SIR. It ensures, इसका purpose क्या है? It ensures that the voter list is accurate, inclusive and free from the discrepancies by allowing new registrations, deletions and modifications. ठीक है, ये सब चीजें होती हैं इसमें. सेक्शन 21 ऑफ आरपी एक्ट 1950. अब ये दूसरा सेक्शन आ गया. सेक्शन नंबर 21, ये क्या एम्पावर करता है? ईसीआई को एम्पावर करता है टू प्रिपेयर एंड रिवाइज द इलेक्टोरल रूल्स इंक्लूडिंग कंडक्टिंग अ स्पेशल रिवीजन एट एनी टाइम विद द रिकॉर्डेड रीजंस. Okay, so ये ECI को empower करता है to conduct the revision of rules. Now next thing, what is the constitutional basis of SIR? ठीक है, constitution में क्या provisions दिए हैं जिससे कि हम लोग SIR conduct कर रहे हैं? First thing, Article 324 vests the ECI with the power to supervise and control the preparation of electoral rolls and conduct the elections. तो Article 324 is very important क्योंकि ये ECI को empower करता है कि elections fair and sound manner में conduct किए जाएं across the country, across the state. Okay. आर्टिकल 326 क्या गारंटी करता है? गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. 18 ईयर्स से अबव जो भी होंगे उनको राइट टू वोट मिलेगा. दैट इज नोन एज योर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. allowing citizens aged 18 and above to vote unless disqualified by. क्या डिस्क्वालिफिकेशंस रहते हैं? कौन से सिटीजन एलिजिबल टू वोट नहीं होते हैं? unless disqualified by law due to criminal conviction. जो criminally convict हो गए होते citizens, they are not eligible to vote. Then, if a person is of unsound mind declared by a relevant court or has conducted some corruption, ठीक है, they are not eligible to vote. तो ये 3 reasons हो गए आपके. अगर वो criminally convict हो चुका है, is of unsound mind और has been involved in corruption, ठीक है, जो भी उसके charges prove हो चुके corruption के, these people will not be eligible to vote. Otherwise, universal adult suffrage है. 18 साल से ऊपर जो भी लोग होते हैं, they are eligible to vote in the country. Now, what are the previous electoral roll revisions? कौन सी पहले revisions हो चुकी हैं? SIRs were conducted in 52, 56, 57. You just go through these timelines, okay?
नाउ रीजन ऑल द टाइम मीन्स ठीक है। बिहार में कब हुआ था लास्ट एसआईआर? इट वाज हेल्ड इन 2003। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा ना। व्हाट इज द नीड फॉर एसआईआर? एसआईआर की जरूरत भी क्यों है हमें? ठीक है, फर्स्ट थिंग, it is for error-free and updated voter list. Okay, helps remove the ineligible voters, add newly eligible or previously missed voters, and correct errors in the electoral roll to ensure accuracy and prevent fraud. अब ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर दिया है ना, ये जो भी पॉइंट्स का स्ट्रक्चर है, दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर मेन्स आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव एज वेल। ये आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो कि नीड क्या होती है एसआईआर का, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मेन्स में। ठीक है, तो गो थ्रू दिस। SIR facilitates re-registration of migrants. Migrants का भी re-registration करता है, shifting populations and ensures voter list aligns with the updated constituency boundaries. Constituency की boundaries update होती रहती time to time, तो उस चीज को भी ये inculcate करता है। Safeguarding democratic legitimacy, SIR supports the idea of one person, one vote by removing ghost voters and duplicates, helping maintain public trust in the democratic system through careful checks. Ghost voters कौन से होते हैं? फेक वोटर्स हो गए, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स ना हो, उस चीज को भी इंश्योर करता है एसआईआर। Boosting voter participation. SIR promotes civic participation through awareness drives and ensures accessible voter registration via door-to-door surveys and online options, especially benefiting the marginalized groups. Basically, इस चीज से information भी spread out होती है marginalized groups को that they have to exercise the right to vote. ठीक है, अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने मार्जिनलाइज होते हैं कि उनको यही नहीं पता होगा कि दे हैव समथिंग नोन एज राइट टू वोट इन द कंट्री। अब जब एसआईआर कंडक्ट होगी, डोर टू डोर सर्वेस कंडक्ट होंगे, ठीक है, उनको इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर किया जाएगा, उस टाइम पे दे गेट टू नो दैट वी हैव टू वोट, वी हैव टू एक्सरसाइज आवर राइट टू वोट। ठीक है, so this is boosting voter participation. Next thing is addressing technological and policy upgrades. SIO supports digital integration of electoral rolls and facilitates policy reforms like remote voting for migrants to enhance accessibility and efficiency. तो ये सब चीजें रहती हैं। Now, हमने नीड देखी, नीड क्या है एसआईआर की। नाउ वी विल कम ऑन टू व्हाट आर द कंसर्न्स विद एसआईआर, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास में एसआईआर से रिलेटेड। फर्स्ट थिंग इज रिस्क ऑफ मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट क्या होता है कि उनका राइट टू वोट खत्म हो जाना, किसी से राइट टू वोट छीन लेना उसका। ठीक है, द एक्सक्लूजन ऑफ वाइडली यूज्ड आईडीज लाइक आधार, राशन कार्ड और इवन वोटर आईडीज कैन डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट द अनप्रिविलेज्ड वोटर्स। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार हो गए, राशन कार्ड हो गए, ये सब चीजें एसआईआर की रिवीजन में नहीं वैलिड। ठीक है, इस बेसिस पे आप लोग अपना वो रेजिडेंस प्रूव नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे एलिजिबल वोटर हैं। तो ये जो वाइडली यूज डॉक्यूमेंट्स है, ये इस चीज में वैलिड नहीं है। क्या कह रहे हैं? ट्रेडिशनली इलेक्टोरल रोल्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स एज्ड 18 एंड अबव बेस्ड ऑन देयर ऑर्डिनरी रेजिडेंस। ऑर्डिनरी रेजिडेंस के बेसिस पे होते हैं जो ट्रेडिशनल इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। बट करंट एक्सरसाइज एसआईआर की जो एक्सरसाइज है, दिस आल्सो कंसीडर्स द प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ का भी उनको प्रूफ देना है, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल वोटर्स इन द एसआईआर। तो ये एक शॉर्ट कमिंग है। Second thing is impact on migrant voters. Frequent moves by migrant workers, students, and seasonal laborers makes it hard to prove residence, risking their exclusion from voter list due to difficulty in updating details. जिनकी migration होती है, उनकी जो details होती है, वो कई बार updated नहीं होती. For that very reason, they can be left out from the electoral rolls. Okay. Third thing is suspicions of a stealth national register of citizens. National registers of citizens को हम लोग बोलते हैं NRC. Requiring documents like birth certificates or legacy data may act as a de facto citizenship test. De facto क्या होता है? In practice. De facto citizenship test को ये वो कर सकते, काउंट कर सकते, ठीक है? Raising concerns of systematic exclusion of marginalized and minority groups. ये लोग फिर से marginalized रह सकते हैं, ठीक है? Growing concerns exist that SIR may be applied discriminatorily. मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है इसकी एप्लीकेशन में, thereby undermining electoral integrity and equitable representation. इस चीज में there can be some lags. लैक ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन। अब जब ये एसआईआर की रिवीजन स्टार्ट हुई, इसमें पब्लिक कंसल्टेशन नहीं ली गई थी, ठीक है? टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन रहा था, बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहा था। बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन होता है कि सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करवाया गया था इस प्रोसेस में, that we'll be conducting an SIR and this and that will be the details, ठीक है? You can give your suggestions and such like information. टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन होती है जब किसी चीज की इन्फोर्समेंट ही होती है सीधा,
कोई डिस्कशन नहीं हुई है डेमोक्रेटिक लेवल पे, पब्लिक से डिस्कशन नहीं हुई है, ठीक है। So there was a top-down implementation and excessive document requirements risk undermining universal suffrage, especially for illiterate and homeless populations. तो ये लोग जो होते हैं इनकी पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से दे कैन रिमेन लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहेगा कि ऐसी कोई एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसी स्ट्रक्चर में आपको अपने मेंस के आंसर्स फ्रेम करने हैं। फर्स्ट, व्हाट वर द challenges, उससे पहले कि what are the main points related with SIR के main provisions क्या हैं, then the challenges, then your way forward, इस चीज को improvise कैसे कर सकते हैं। First point is inclusive documentation policies. Although Aadhaar is not a proof of citizenship, it remains the most accessible ID कि आधार को हमें एक डॉक्यूमेंट मान लेना चाहिए SIR की रिविजन में, ठीक है। this thing. Second of all क्या है, robust validation, verification and data accuracy. Conduct Aadhaar voter ID linking with safeguards, door-to-door verification by BLOs, and regular audit by electoral authorities. Example, State Election Commission to ensure an error-free and transparent SIR of electoral rolls. ये सब चीजें रहती हैं। Next thing is political and legal consensus. ECI should consult all stakeholders. सबकी participation रहनी चाहिए, including who? Civil society, and run public awareness campaigns to clarify SIR rules and deadlines. कोई भी misconceptions से deal करने के लिए भी awareness campaigns होने चाहिए पहले, and they must also clarify the SIR rules कि क्या क्या rules रहेंगे इस चीज के और deadline कब तक है इस चीज की, ठीक है। This must be clarified beforehand. Additionally, judicial oversight by special tribunals and clear guidelines for EROs are essential to uphold constitutional safeguards and prevent arbitrary voter exclusions. Voter exclusions ना हो उस चीज का ध्यान रखना है। Next thing is technology driven safeguards. Technology की help लेनी चाहिए हमें, such as AI. Conduct AI powered anomaly detection to flag suspicious deletions or additions. Example, bulk removal from one locality should be flagged as suspicious by AI. AI भी flag कर सकता है ये सब, ठीक है। Implement blockchain based voter logs and prevent a real time tracking dashboard to prevent tampering SIR of electoral rolls. Now, inclusivity measures कि सब लोग include हो जाएं इसमें, क्या क्या measures ले सकते हैं उसके लिए। Organize special camps for marginalized groups, example disabled, the tribals, provide multilingual helplines. बहुत सारी languages में helplines हमें provide करनी चाहिए हमें। AI की help से भी हम ये कर सकते हैं। And conduct post revision sample surveys to ensure accurate enrollment and minimize the exclusions. Yeah. Now, we'll come on to a prelims practice question. Try to answer this question. With reference to the SIR of electoral rolls conducted by Election Commission of India, consider the following statements. So based on these four statements, you have to answer how many of the given statements are correct. First, you read in the question that if they have asked about correct statements or incorrect statements, so this should be the first step. Next of all, about one by one statements that which statement is correct and which is not correct. First statement is the revision is carried out under the provisions of Representation of People Act 1950. This statement is correct. I told you कि आपके 1950 जो इलेक्शन से पहले सारे प्रोसेसेस रहते हैं वो सब इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। Second thing is the primary objective of an intensive revision is to conduct a door-to-door enumeration to verify the existing roll and enroll all eligible voters who have attained the qualifying age. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डोर टू डोर सर्वेज होंगे, कौन कंडक्ट करेगा? बीआरओस कंडक्ट करेंगे, बूथ रजिस्ट्रेशन बीएलओस कंडक्ट करेंगे, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, थर्ड स्टेटमेंट कह रही है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन इंटेंसिव रिविजन इन एनी कंस्टिट्यूएंसी और स्टेट बेस्ड ऑन द नीड टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड हेल्थ ऑफ द इलेक्टोरल रोल। तो यस, ईसीआई हैज द पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं ईसीआई के पास अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। ये भी हमने अभी पढ़ा है, कवर किया है। Fourth point, during an intensive revision, the existing draft rule is treated as a final document and no additions or deletions are permitted until the next summary revision. तो कह रहे हैं कि जब रिविजन हो रही है तो जो एग्जिस्टिंग ड्राफ्ट रूल है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हम फाइनल डॉक्यूमेंट मान लेते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वाई? बिकॉज रिविजन का जो एसआईआर का पर्पज है वही ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ड्राफ्ट रूल है उसको हमें अपग्रेड करना है, उसमें इंक्लूजन और डिलीशंस देखने हैं जो जो हुए हैं उसके हिसाब से हमें उसको अपडेट करना है। So this statement is wrong. So how many of the statements are correct? Only three statements are correct. Fourth statement is wrong. So C should be the answer. Only three statements. Okay. Now next article पे आते हैं. I hope this article was clear about XIR.
अब नेक्स्ट आर्टिकल कवर करेंगे विच इज अबाउट पीएम गति शक्ति. दिस इज ऑल्सो पीआईबी आर्टिकल. पीएम गति शक्ति का क्या आर्टिकल है, सी दिस. दिस इज डायरेक्टली टेकन अप फ्रॉम द PIB website. PM Gati Shakti, transforming India's infrastructure and connectivity. Basically, this is a step or an initiative to transform and integrate the infrastructure and connectivity of India. ठीक है, जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करना है आपस में एंड उसको ट्रांसफॉर्म करना है. विल सी हाउ. First, let us see this article. On the 75th Independence Day, Prime Minister Modi announced that PM Gati Shakti initiative during his address to the nation from the ramparts of the Red Fort. This is the National Master Plan for Multimodal Connectivity. So this is the thing. Master plan है किसके लिए? Multimodal connectivity के लिए. Multimodal क्या होता है? बहुत सारे modes से, where your roadways, railways, waterways are connected. ठीक है, that is your multimodal connectivity. It was launched on October 13, 2021. This is an important date कि PM गति शक्ति कब launch हुआ था? 2021 में launch हुआ था. It's set to celebrate its third anniversary. Now, this is not important. The digital platform is designed to bring various ministries. बहुत सारी ministries को same platform पे लाता है, including railways, roadways, to ensure integrated planning and coordinated execution of infrastructure projects. Now, the initiative aims to prove seamless and provide seamless and efficient connectivity for the movement of people, goods, and services across various modes of transport, thereby enhancing last mile connectivity. Last mile तक हमें connectivity enhance करनी है, reducing the travel time. PM Gati Shakti incorporates the infrastructure schemes of various ministries and state governments, such as which ministries are included: Bharatmala, Sagarmala, inland waterways. This is for roadways or highways. This is for waterways. This for inland waterways. Then your dry or land ports and Udan. Udan is Ude Desh Ka Aam Nagrik is your this connectivity scheme for the regional airports. PM Gati Shakti incorporates infrastructure schemes for various ministries and state governments, such as again this thing. Okay. Now this PM Gati Shakti. Now some more information that what is it in detail. Launched in October 2021, it is a rupees 100 lakh crore investment initiative for infrastructure development over the next 5 years. Now, it promotes integrated development across 7 economic drivers. Which are the 7 economic drivers? इसके along हमें development ensure करनी है. Railways, roads, ports, waterways, airports, mass transports and logistics. ये 7 sectors हैं जिसके क्रॉस हमें seamless integration and development ensure करनी है. ठीक है, supported by energy, IT, water and social infrastructure. ये सारी ministries भी इसमें आती हैं. It aims to cut, ये इसका aim है, to cut the logistics cost through integrated infrastructure planning. तो इधर से उधर जाने में कॉस्ट लगती है, हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट लगती है, उसको डिक्रीज करना है, इसका एम है. Acting as a digital backbone. Digital backbone कैसे act कर रहा है? Which is macro level planning and micro level implementation, links existing schemes. Which schemes it is linking? Bharatmala, Sagarmala, Udan, and connects. This is Bharatmala is for land connectivity, Sagarmala is for water connectivity, Udan is for your air connectivity. ये सब schemes को link करना है and connects economic zones to boost the business competitiveness. Now, next is your geospatial data platform. It integrates 200 plus layers of geospatial data onto a centralized portal. एक ही portal पे इतना सारा data को ये centralize करता है. It gets this much data connected across the platform. One platform, centralized platform, enabling the users to visualize multi-layer data for a holistic view of existing and planned assets. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज योर इकोनॉमिक हब्स टारगेट्स. टेक्सटाइल क्लस्टर्स, ये सब चीजों को ये कनेक्टिविटी इनहांस करेगा कि हमारे टेक्सटाइल क्लस्टर्स को कनेक्टिविटी मिल जाए, फार्मास्यूटिकल हब्स को, डिफेंस कॉरिडोर्स को एंड एग्रीकल्चरल जोन्स टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी. जब कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ठीक है, हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट डिक्रीज होगी, कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाएगी, which will help our economy. Now, next is your tech-driven planning. टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया है इस चीज में हमने, इस इनिशिएटिव में? Uses advanced spatial tools and ISRO satellite imagery by Visag N. I will tell you what is the full form of Visag N for data-driven project management. Now, PM Gati Shakti portal is developed by Visag N. इन्होंने ही डेवलप किया है गति शक्ति का पोर्टल.
क्या फुल फॉर्म है इसकी? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। So this is a portal which has developed this PM गति शक्ति पोर्टल। ये इंस्टीट्यूट है, इसने डेवलप किया गति शक्ति पोर्टल को। ठीक है भाई साहब, इन आपको याद रखना। Now next thing, what are the 6 pillars of PM गति शक्ति? First is your dynamic, allows real time monitoring of project progress। जितनी प्रोग्रेस हुई है प्रोजेक्ट की वो हमें रियल टाइम में पता लग रही है, उसी टाइम पे पता लग रही है। देर इज नो लैग इन द अपडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। Next thing is analytical, provides GIS based spatial planning tools। ठीक है, हमने देखा अभी कैसे ये geospatial instruments को यूज कर रहा है। Comprehensiveness, integrates all initiatives into a centralized portal। देखा हमने बाईसाग एन ने ये पोर्टल डेवलप किया है हमारा। Prioritizing, इट enables क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन। जो भी प्रोजेक्ट जरूरी होगा उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा पहले। ऑप्टिमाइजेशन, आइडेंटिफाइज ऑप्टिमल रूट्स फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सो दैट हमारी कॉस्टिंग कम हो उस चीज में। सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर्स कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये सब चीजें इंश्योर करता है। Now next thing, try to answer this mains question from the above information. You can add additional information from your side also. 10 marker question है, 150 words में answer करना है। Evaluate the significance of PM Gati Shakti in improving last mile connectivity and reducing logistics costs. तो उसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है, इस एस्पेक्ट में बताना है। इन इम्प्रूविंग द लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो रही है इससे, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जा रही है। जब भी ऐसे का क्वेश्चन पूछे जिसके 2 पार्ट्स हों, आई प्रेफर दैट यू स्प्लिट द आंसर इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें कि आप 4-5 पॉइंट्स इससे रिलेटेड लिखें एंड नेक्स्ट 4-5 पॉइंट्स you write according to this, reducing logistics cost. Try to answer this question in this format. Okay. Now we'll do a plus question. With reference to PM Gati Shakti National Master Plan, consider the following statements. There are 4 statements. On the basis of this, you have to identify which of the statements are correct. Correct identify करनी है। First statement क्या कह रही है? It is a digital platform based on a GIS, graphic geographic information system that integrates infrastructure data from various central ministries and state departments. तो यही तो है जो हमारा इनिशिएटिव है पीएम गति शक्ति का। It is all about this only, GIS based है ये, एंड बहुत सारी मिनिस्ट्री से एक प्लेटफॉर्म पे डेटा कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। यही एम है उसका, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस करना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एंड इम्प्रूव सप्लाई चेन एफिशिएंसी बाय प्रमोटिंग मल्टीमोडल कनेक्टिविटी। वी ऑल्सो रेड अबाउट दिस। मल्टीमोडल कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की बात की है, इंप्रूव करने की बात की। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। Third statement क्या कह रही है? The initiative is driven by 7 specific growth engines which include roads, railways, airports, mass transport, ports, waterways and logistics infrastructure. तो ये हमने 7 इंजन भी इसके पढ़े हैं, क्या ग्रोथ इंजन हैं जो जो ये सब इंक्लूड करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। इट इंक्लूड्स एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एंड द टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो इनिशिएटिव है पीएम गति शक्ति का वो इन सबकी हेल्प भी ले रहा है। ठीक है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट। सो डी इज योर आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज योर इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दीज टाइम्स। एआई पे तो क्वेश्चन किसी ना किसी तरह आएगा ही। ठीक है, तो इंडिया एआई मिशन क्या है? ओवर ₹10,300 इन्वेस्टमेंट एंड 38,000 जीपीयूज पावरिंग इंक्लूसिव इनोवेशन। जीपीयूज की फुल फॉर्म क्या होती है? जीपीयूज आर द इंजन्स ऑफ एआई। अगर जीपीयू नहीं होंगे तो हमारा एआई ड्राइव नहीं होगा। जीपीयू होता है हमारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एआई को रन कर सकते हैं। एआई के प्रोग्राम्स रन करते हैं जीपीयूज की हेल्प से ही। ठीक है, तो दिस मच करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बीन देयर एंड 38,000 जीपीयूज पावरिंग इंक्लूसिव इनोवेशन हैव बीन रजिस्टर्ड। ठीक है, की टेकअवेज क्या है इंडिया एआई मिशन के? Rupees 10,000 plus crore allocated over 5 years for India AI mission with ITNA GPUs deployed. 6 million people are employed in the tech and AI ecosystem. So see how much employment it is providing to the people. 6 million people are employed in this sector as of now. Tech sector is projected to cross $280 billion in revenue this year.
Not so important. AI could add $1 trillion, 1.7 trillion to India's economy by 2035. This is important. You can mention it in mains. कि AI की importance क्या है? इंडिया को क्यों AI डेवलप करना चाहिए? Why we should switch on towards AI? Because it can add $1.7 trillion to the India's economy by 2035. You can start your mains answer by writing this statement. अगर आपको AI के question आता है तो ठीक है. Now, ये पीआईबी का आर्टिकल है. नाउ इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं? इंडिया स्टैंड्स एट द कस्प ऑफ अ न्यू एरा. कौन सा न्यू एरा है? पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड शेपिंग द नेशंस प्रोग्रेस. AI is no longer limited to research labs or big corporations. Now it is a part of our daily life. It is reaching citizens at every level, from improving healthcare access in remote areas to helping farmers make informed crop decisions. So, you see the wide range that is it is covering. Healthcare से लेके agriculture तक सब जो चीजें हैं वो इसमें आ रही हैं, AI में आ रही हैं. AI is making daily life simpler, smarter, and more connected. It is revolutionizing classrooms to personalized learning, making cities cleaner and safer, and enhancing public services through faster data-driven governance. ठीक है, गवर्नेंस में भी हेल्प हो रही है, फास्टर गवर्नेंस हो रही है. Now, initiatives such as India AI Mission and Centers for Excellence for AI are at the heart of this transformation. ये जो initiatives हैं, these are very important initiatives. They are expanding access to computing power, supporting research, and helping startups and institutions create solutions that directly benefit people. India's approach focuses on making AI open. ये अभी जो इंडिया एआई समिट हुआ है उसमें भी इंडिया ने इसी पॉइंट पे स्ट्रेस किया है दैट वी शुड मेक एआई ओपन. ओपन मीन्स एक्सेसिबल फॉर ऑल. उस पर कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए. अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, इंश्योरिंग दैट इनोवेशन लिफ्ट्स अप द सोसाइटी एज अ होल. बेसिकली एआई को इंक्लूसिव बनाने की बात की है इंडिया ने टाइम एंड अगेन. ठीक है, दैट एआई शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड इनकलकेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, शुड बी अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. Now, AI होता क्या है? ये भी PIB से मैंने लिया है. What is artificial intelligence? So this definition becomes important. AI is the ability of machines to perform tasks that normally require human intelligence. अब उस चीज को रिप्लेस कर रहा है वो, वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको नहीं चाहिए होगी. इट विल ट्रेन अपॉन दैट. It enables systems to learn from experience, adapt to new situations, and solve complex problems independently. ये AI का purpose है. AI uses datasets, algorithms, and large language models. Large language models को हम लोग क्या बोलते हैं? LLMs बोलते हैं, large language models, to analyze information, recognize patterns, and generate responses. Over time, these systems improve their performance, allowing them to reason, make decisions, and communicate in ways similar to humans. ओवर टाइम जो एआई की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती जाती है बिकॉज इट बिल्ड्स अपॉन द डेटा. जितना डेटा ज्यादा होगा इसके पास में, इट विल बी मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इंडिया एआई मिशन? सम मोर पॉइंट्स, सम मोर डिटेल्स अबाउट दिस. Again, it is a rupees 10,372 crore government initiative under the this ministry is important. कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी ने लॉन्च किया. Launched to position India as a global leader in artificial intelligence, it aims to build sovereign AI capabilities, foster democratic innovation, and make AI technology affordable and accessible for public good. Public good is a good that is available to all people without discrimination. It is not a private good. ठीक है, economics में आप पढ़ते हो what is a public good. Now, what are the core objectives of this initiative? India AI initiative के core objectives क्या हैं? Technological sovereignty focuses on making AI in India. टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी का क्या मतलब है कि इंडिया के पास में खुद की इतनी क्षमता होनी चाहिए दैट वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी इन इंडिया इंडिजिनसली. ठीक है. सो मेकिंग एआई इन इंडिया, मेक इन इंडिया के अंडर ही आ गया ये. एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया. ठीक है, इंडिया के लिए बनाओ और इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के नीड्स के हिसाब से इट शुड वर्क इन इंडिया by decreasing reliance on foreign AI infrastructure. ठीक है. Sectoral development targets real-world public sector challenges in priority domains like healthcare, agriculture, climate change, and governance. So these all are the wide areas where AI has been used in the application process. Now, what are the 7 pillars of India AI mission? This is again very important. All these things have been taken up from the PIB itself. 7 pillars India AI mission के ये हैं. India AI compute. Computing के लिए enhance करते हैं. Enhancing computational resources for AI development. Second thing is India AI dataset platform, providing a comprehensive platform for AI datasets.
इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स में क्या है, इक्विपिंग द वर्क फोर्स विद नेसेसरी एआई स्किल्स। हमें वर्क फोर्स भी चाहिए जो इतनी केपेबल है दैट दे आर कंफर्टेबल विद वर्किंग विद एआई सिस्टम। ठीक है, उसको और एनहांस करने में दे कैन कंट्रीब्यूट, सो दैट वर्क फोर्स वी हैव टू generate safe and trusted AI, ensuring the ethical and secure use of AI, that कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की परमिशन के बिना ना यूज की जाए एआई के थ्रू। India AI Innovation Center, fostering innovation and research in AI technologies. India AI application development initiatives, जो भी apps develop करनी है उसके लिए है। India AI startup financing, providing financial support to the AI startup। जो भी startups हैं इस फील्ड में उनको financial support की बहुत जरूरत है इस टाइम पे। कोई भी प्रोजेक्ट अपनी इनिशियल स्टेज में होता है, they need the support of the government, backing of the government। ठीक है, so that now, what are the government initiatives? Initiatives like Digital India, Make in India and Smart Cities Mission, ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कि एआई के थ्रू हो रहे हैं। जीआई क्लाउड इज मेघराज, क्लाउड सिस्टम होता है जहाँ पे हमारा एक डेटा स्टोरेज सिस्टम होता है, बेसिकली क्लाउड सिस्टम, जहाँ पे गवर्नमेंट कैन यूज द क्लाउड टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इट हैज। ठीक है, ग्लोबल इंडिया एआई समिट होस्टेड बाय इंडिया, ड्राइविंग द एआई एडॉप्शन अक्रॉस सेक्टर्स। ये इसी साल हुआ था ग्लोबल इंडिया एआई समिट इन द मंथ ऑफ February 2026। नेक्स्ट इज योर क्लस्टर्स। एआई क्लस्टर्स आर इमर्जिंग इन इंडियन सिटीज। क्लस्टर्स का है जहाँ बहुत सारे एआई के सेंटर्स हैं ड्यू टू फैक्टर्स such as supportive policies, research institutions and increasing demand for AI technologies. So इन सब फैक्टर्स के करके what we are witnessing is development of clusters. Major cities include, कौन कौन सी मेजर सिटीज हैं जहाँ पे एआई के क्लस्टर्स हैं? Those are your Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Chennai, Pune and National Capital Region NCR region. Now Bangalore is known as the Silicon Valley of India. This is important. Bangalore में ही है ज्यादा क्लस्टर्स जो एआई की हैं। सारी टेक इंडस्ट्री हमारी, सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंडस्ट्री इज देयर ओनली। आईटी इंडस्ट्री सारी बैंगलोर में। With a thriving ecosystem of multinational startups and academic institutions, ये सब included हैं इसमें। It has over 2,000 active startups and annual IT exports exceeding $50 billion. So इतने exports हो रहे हैं Bangalore alone से। Now, what are the challenges anticipated for India AI mission? We have read about how important this India AI mission is. 7 pillars कौन से India AI mission के? Then where are the clusters of this AI? Now we come on to what are the challenges in adoption of India AI mission for India. First thing is limited GPU capacity and infrastructure. GPU, as I told you, graphic processing unit है जिस पे AI ट्रेन करता है। AI के मॉडल GPUs पे ही ट्रेन करते हैं, बट उसकी कैपेसिटी अभी तक इंडिया में लिमिटेड है एंड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड है। The mission's objective to build a high-end AI compute capacity of 10,000 GPUs is ambitious. This aim is ambitious, but there are concerns about the timely procurement and deployment of these GPUs to meet the growing demands for AI applications. Why? Because अभी तक हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उससे रिलेटेड। ठीक है, we are mainly import dependent on these GPUs also. Next is your high costs of GPU. GPUs की cost बहुत ज़्यादा है, like NVIDIA's A100 chip. NVIDIA is a company which is leading in GPU manufacturing as of now. Up to $10,000 pose a barrier for smaller businesses. Smaller businesses cannot afford such a huge amount of investment, so that is why it becomes a barrier. Availability of GPUs is a bottleneck, and accelerating the acquisition and integration of this hardware is crucial for advancing the AI capabilities. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमें जीपीयूज पे वर्क करना है बेसिकली। सेकेंड थिंग इज डेटा एक्सेस एंड क्वालिटी। ट्रेनिंग एआई मॉडल्स को क्या चाहिए होता है? डाइवर्स डेटा सेट्स चाहिए होते हैं जिसपे वो ट्रेन कर सकें अच्छे से, पर्टिकुलरली फॉर इंडिक लैंग्वेजेस। इंडिया में जितनी लैंग्वेजेस हैं उन पे ट्रेन कर सके ये is crucial. However, the current data sets are inadequate for developing effective indigenous AI models. जो अभी हमारे पास में डेटा सेट्स हैं, they are not so efficient in developing AI models at par. थर्ड थिंग इज लिमिटेड एआई एक्सपर्टीज एंड हाई कॉस्ट। अभी भी बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है इसकी हाई रह रही है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स इन इंडिया। एज ऑफ नाउ एआई प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है इंडिया में। Efforts are being made to address this, but bridging this gap remains a challenge. Next thing is environmental concerns. This is a very big concern related to AI. जो भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है अभी, गूगल का जो
AI hub है basically that is being set up in Andhra Pradesh as of now. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा environmental concerns है, water related challenges होते हैं because AI needs huge amount of water to run its machinery. Okay, let's see this. AI queries, especially to open AI's ChatGPT, use significantly more energy than regular Google searches. Google search हम वैसे ही करेंगे, that will consume a less amount of energy. But ChatGPT जैसे हमारे जो softwares रहेंगे, they consume a huge amount of energy. Image-based AI searches consume even more energy. AI models process and sift through a larger amount of data than simple searches. क्यों ये ज़्यादा energy consume करें? क्योंकि they have to go through a large amount of data to simplify those searches. To make that search efficient, they have to go through and sift a large amount of data, requiring more electrical signals for processing, storing, and retrieving data. ठीक है तो एनर्जी की बात हो गई वाटर की बात इसमें मिसिंग है बट दे कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो एआई के सिस्टम्स को कूल रखने के लिए ह्यूज टन्स ऑफ वाटर आर नीडेड नाउ एआई के हमने यूजर्स देख लिए ठीक है उसके हमने वो देख लिए चैलेंजेस क्या है नाउ यू शुड एंड अपॉन अ वे फॉरवर्ड नोट विच शुड बी अ पॉजिटिव नोट कि इंडिया कैसे इस चीज में एनहांस कर सकता है वे फॉरवर्ड इज फर्स्ट इज इंसेंटिवाइज हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग The Production Linked Incentive Scheme for IT Hardware, notified in 2021, PLI, ठीक है हार्डवेयर स्कीम के लिए होना चाहिए and also for semiconductors offers incentives for increased investment in domestic manufacturing for eligible firms. Expanding this initiative could further stimulate the growth in this sector. तो हमारी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे कमांड अच्छी होनी चाहिए नेक्स्ट थिंग इज स्टार्टअप सपोर्ट स्टार्टअप्स जो होंगे हमारे उनको सपोर्ट करना बनता है हमारा इस स्टेज पे क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज येट इन अ nascent stage provide financial incentives mentorship and incubation facilities for AI startups establish AI focused accelerators and incubators like T Hub is India's largest incubation center of Telangana so such like initiatives should be supported third thing is prioritize ethical AI. This is also very important that AI should be ethical in its use, develop comprehensive AI ethics guidelines and regulations, establish independent AI ethics boards, promote transparency and explainability in AI systems, and conduct regular AI audits to identify and mitigate biases. Biases कम करना है हमें basically AI में ठीक है that is why we are also saying कि indigenous development of AI should be there. जो हमारे foreign AI होते हैं, they have certain biases. मतलब they can have biases against the Indian population also. That is why we are trying to promote the indigenous development of AI systems, which would be ethical. Next आते हैं हम लोग AI applications for societal impact, identify key societal challenges and develop AI driven solutions. Prioritize AI applications. Apps basically हमें develop करनी है healthcare में, agriculture, education and other critical sectors. Ensure equitable access to AI benefits for all segments of the society. Next हम आते हैं promote sustainable AI. Sustainable use promote करना है जिसमें कि environment को बहुत ज़्यादा harm ना हो ठीक है We should take into consideration environmental concerns also. Support sustainable AI by investing in energy efficient AI algorithms and hardware, promoting the use of renewable energy sources for data centers, and creating AI powered solutions for energy optimization and resource management. Next is your talent gap. Talent gap को हमें decrease करना है जो भी हमारे professionals हैं we should train them towards AI development. Foster partnerships for internships. Internships के through हम लोग ये कर सकते हैं research projects and faculty exchange. Attract overseas students and employees to invest in India. Increase salaries and benefits to retain the AI talent. इंडिया में ही एआई टैलेंट को रिटेन करने के लिए एंड बाहर से जो हमारी फैकल्टीज हैं उनको भी हमें बुलाना चाहिए टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन इंडिया सो दैट वी कैन हैव अ वर्क फोर्स व्हिच कैन work towards AI development in a very professional manner. Now, this is one question, 15 marker question of 250 words. Means the question hai, try to attempt this. Discuss the objectives and key components of India AI mission. How does it aim to transform India's AI landscape? So this is the question. Try to attempt this question. Okay. Now this is a prelims question. Let's try to answer this. With reference to the India AI mission, consider the following statements. These are the four statements. You have to tell which of the above statements are correct. First statement, the mission aims to establish a sovereign AI ecosystem by building indigenous compute infrastructure, foundational models, and high quality databases. So, this is the aim of the mission basically. So, this statement is correct statement.
सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं. इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ मल्टीपिलर अप्रोच दैट इंक्लूड्स द इंडिया एआई कंप्यूट पिलर, एआई कोर्स, डेटासेट प्लेटफॉर्म एंड द इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव. Yes, these all initiatives are being included in the India AI mission as of now. So the statement is also a correct statement. Third statement पे आते हैं. The mission focuses extremely exclusively on the development of LLMs to compete with global technology giants. सिर्फ एलएलएम की डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है ये मिशन जो है हमारा है. एलएलएम होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सिर्फ वही उसी की डेवलपमेंट कर रहा है बेसिकली. नो, एआई इंडिया एआई इनिशिएटिव इज मच लार्जर देन दैट, आई टेल यू. ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं. पहले फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट एम्फसाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ एआई अक्रॉस की सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड गवर्नेंस टू इंश्योर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. So again, this statement is correct. It is a general statement. It is correct. Now, which of the statements are correct? Except three, all the statements are correct. One, two, and four are correct. Okay. The third statement incorrect क्यों है? The mission is not limited to LLMs. It also supports multimodal models, video generation models like Varia, and sector-specific applications in fields like climate change, cybersecurity, and assistive learning. इन सब में भी एप्लीकेशन है, सिर्फ LLMs में एप्लीकेशन लिमिटेड नहीं है ये. ठीक है. I hope this article is clear. We move on to the next one. Next article says G7 outreach discussions. Prime Minister addresses the G7 outreach session. G7 के बारे में पढ़ेंगे basically क्यों important है. Now this outreach session has happened. Prime Minister has addressed this session. इस सेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या प्राइम मिनिस्टर जी ने important points इसमें दिए थे. PM today participated in outreach session of G7 summit. In his address, PM highlighted that energy security was among the leading challenges facing future generations. Prime Minister has elaborated this point. While elaborating on India's commitment to inclusive growth, he noted that availability, accessibility, and affordability and acceptability were the principles that underpin India's approach to energy security. इंडिया की अप्रोच एनर्जी सिक्योरिटी में ये सब चीजों के लेके रहती है. अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी. Next thing is, he further emphasized that even though India is the fastest growing major economy in the world, now this becomes important, it has successfully met its Paris commitments ahead of time. तो Paris commitments होती हैं, NDCs होते हैं countries के, इंडिया ने वो अपनी अचीव करनी है ahead of its scheduled and several global initiatives such as International Solar Alliance Initiative. These initiatives are important. ये सारे इंडिया ने लिए हैं. इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज ISA, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ठीक है. ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, मिशन लाइफ एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव एंड कॉल्ड अपॉन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू फर्दर स्ट्रेंथन देम. These initiatives have been taken up by India. Prime Minister has called the global community, other countries, to further strengthen upon them. Okay, now what is G7? We read about the countries that are included in G7. इनकी प्रेसिडेंसी वन ईयर के गैप पे रोटेट होती है इनमें. ठीक है, ये 7 कंट्रीज के अमंग प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है एवरी ईयर. So the countries included are France, USA, Great Britain, Germany, Japan, Italy, and Canada. You should know these countries. These are very important. 7 countries. Okay. Now some information about G7. Group of 7 comprises Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, and the United States. The EU also participates as a permanent non-enumerated member. This is important. EU participates as a permanent but non-enumerated member. उसका इसमें enumeration नहीं है basically. It is now G7 is an informal, consensus-driven forum of advanced economies, not a treaty-based organization. This is also very important thing. कि कोई treaty इसका basis नहीं है, इसके genesis का basis नहीं है, but it is an informal and consensus-driven forum of advanced economies. Consensus driven मतलब वो आपस में आके उन्होंने एक consensus पे reach किया and they formed this grouping. History and origin, it originated in 1975, formed as G6. उसमें ये सब members थे. ठीक है, in response to the 1973 oil crisis and global financial turmoil, so it was formed in 1975. Canada joined later in 1976. Then Russia joined in 1997, making it G8. But Russia withdrew when Russia was suspended in 2014 following the annexation of Crimea, returning the group to the G7. So Russia include हुआ था इसमें 1997 में, but it was excluded in 2014. Again, this grouping is now left with 7 members, hence known as G7.
Structure, it has no permanent secretariat or formal charter. The presidency rotates annually among the member states. I've already told you this. What are the key characteristics? Economic influence क्या है? G7 nations account for up to 30% of global GDP, PPP basis pay, and around 40% of nominal global economy. So a major chunk of global economy is contributed by these nations. These are basically economically strong nations. Norm setting, the group focuses on global issues like international peace and security, climate change, trade policies, and global health. Guest invitations, though not a member, India is often invited. India is not a permanent member, but is often invited to G7 summits as an outreach of guest country due to its rising economic and geopolitical standing in the global south. For this very reason, India is a guest nation. Now, this is a prelims practice question. Let's see. With reference to G7, consider the following statements. You have to tell which of the statements are correct. So, first statement, it is a formal intergovernmental organization established by treaty possessing a permanent secretariat and a legal charter. So, इसमें जो points दिए गए हैं, all are incorrect. Why? First of all, it is not a formal intergovernmental organization. It is an informal consensus-based organization. Was it established by treaty? No, it was established by consensus. So, this is wrong. This is wrong. Possessing a permanent secretariat, ये भी नहीं है. The presidency gets rotated among its members on a yearly basis and a legal charter. Legal charter है नहीं. Okay, so this statement is wrong. Second statement, the G7 members consist of world's largest IMF advanced economies that share common values such as liberal democracy and pluralism. So this is correct. Third statement, the European Union participates as a non-enumerated member attending all summits and policy discussions. I already told you EU is not a permanent member. It is a non-enumerated member, but it is a permanent member. Okay, so this is correct. Russia was permanently expelled in 2014 following the annexation of Crimea, reverts it back to G7. So the statement is also correct. 2, 3, and 4 are correct. 1 is wrong. So answer is B. Now we'll come on to a mains practice question. I have given a framework. You can go through it also. Briefly, I'll discuss with you. The relevance of G7 in contemporary global governance is often debated, particularly given the emergence of more inclusive platforms like the G20. ये कह रहे हैं कि G20 के आने से G7 की relevance is often debated at the global level. In this context, analyze the strategic significance of G7 for India and discuss why India continues to be a frequent invitee to its summits despite not being a member. Now you have to answer this question. So कैसे आंसर करते हैं? We'll answer it in the standard format. Introduction, body, then you have your conclusion. तो इंट्रोडक्शन में तुम क्या कर सकते हो? यू कैन डिफाइन G7 क्या है ये बेसिकली, ठीक है. ब्रीफली मेंशन द शिफ्ट इन ग्लोबल डायनेमिक्स, क्योंकि उन्होंने बोला है कि शिफ्ट आया है तो उससे G7 पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. फ्रॉम द पोस्ट World War II dominance of the G7 to the current multipolar reality, now we are facing a world which is at multipolarity, where the G20 plays a larger role. You have to give the examples कि G20 का larger role कैसे है इस टाइम पे in the global economic governance. बॉडी में क्या लिख सकते हो? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड व्हाई इंडिया इज एन इनवाइटेड. सो यू कैन रीड दिस. ग्लोबल अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है इसमें? ग्लोबल अलाइनमेंट. सच प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग इंडिया अ ग्लोबल अलाइनमेंट टू एंगेज विद द वेस्टर्न ब्लॉक. देन यू हैव इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. थर्ड थिंग इज ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग. इन चीजों में इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है G7 की. नाउ व्हाई इंडिया इज एन इनवाइटी? स्ट्रैटेजिक वेट है इंडिया का, ग्लोबल साउथ की वॉइस है इंडिया, दैट इज वाई. इकोनॉमिक साइज इंडिया का बहुत बड़ा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. थर्ड थिंग इज इट इज ब्रिजिंग द डिवाइड between the G7 and global south. It is helping resolve the north south divide. Now what are the challenges or a critical view क्या है? Mention that G7 is often criticized as the rich countries club, basically elite club बोला जाता है इसको. Know that India maintains a policy of strategic autonomy. Engaging with G7 does not mean sacrificing ties with other groupings like BRICS or the SCO. Now, conclusion, we should conclude on a positive note. Conclude by stating that while G7's power has diminished, but still for India, engagement with G7 is a pragmatic necessity to align national interests with the global agenda. So this is the thing. This is how you have to answer a mains question. I have given you a brief overview of how you can attempt your answer. Okay, so these were the basic main topics that were covered in that month's PIB. June के PIB में cover हुए थे. These were the main topics. I hope you understood the topics. Okay, कोई भी doubts हो you can mention in the comment section. And I'll see you in the next session. Thank you.